हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अभी 12th क्लास की जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो उसमें बस अब 3 मंथ्स रह गए हैं और नाउ इट इज़ द टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। then otherwise it becomes very difficult for the students to cover all the portions, especially if I talk about the 12th class over there. Most of the subjects are over there, biology is there, chemistry, physics, a lot of syllabus is there. So for a student it is not possible to cover all the portions if you have not started yet the preparation. ठीक है, तो आज हम उठाने वाले हैं मैट्रिक्स, जो कि ईजीएस्ट चैप्टर है इसमें मैथमेटिक्स में, आपकी 12th क्लास के मैथमेटिक्स में। तो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा और जो ये मैट्रिसेस पार्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा आगे भी ज़रूरत आएगा। अगर आप सपोज़ अगर आपके पास बायोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस लेके जा रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर यू विल चूज़ द इंजीनियरिंग। सो दिस हैज़ द वास्ट यूजेज इन द इंजीनियरिंग ओवर दियर। सो मैट्रिक्स पार्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है, स्पेशली इंजीनियरिंग में, नो मैटर विच ब्रांच यू हैव। In that particular mathematics, this matrices plays a very bigger role in that particular area, right? So ये जो मैट्रिक्स है ये ओनली इसके लिए यूज़ नहीं होता, मतलब सपोज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए ये बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके। फिर फर्दर ब्रांचेस में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अगर हम काम बोल सकते हैं, और इसमें बिजनेस में फॉर पर्सनल कंप्यूटर सेल्स प्रोजेक्शन, बहुत सारे यूजेज है इसके मैट्रिसेस के। सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है इसमें, तो आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करना हो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, A4 शीट ले लें और उसमें सभी टॉपिक्स जो है पहले जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो सपोज़ इसमें टॉपिक्स है मैट्रिसेस पार्ट में, मैंने सभी पार्ट्स लिखे हैं इसमें, तो आपको फोकस करना है इस पर। मैट्रिसेस फर्स्ट पार्ट है, सो दिस इज द डेफिनेशन पार्ट विच आई हैव रिटन ओवर हियर, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। सो सेकंड one is types of matrices, right? Next one is order of matrices, transpose of matrix is the another part, and symmetric and skew symmetric matrices are there, and transformation of a matrix, and finally the invertible matrices over here. तो ये सारे पार्ट्स हम इस पूरी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आज का टॉपिक है मेरा वो है मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम लेंगे, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हम इस वीडियो में डिफाइन करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा वीडियोस अगर लंबे हो जाएंगे तो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो एज़ फॉर एज पॉसिबल फॉर मी टू मेक इट शॉर्ट, आई विल मेक इट राइट। सो these two topics I will cover in this particular video, that is matrices, definition of matrices and order of matrices. Then we go further for the types of matrices over there, right? So first of all, let me tell you the definition. That is, a matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. Let us understand this particular definition, my dear friends, with the help of an example. So for everything we should take examples so that it will become easy for you people to understand the concept, right? So I will write here, suppose I have suppose I will take notebook example. So I have suppose notebooks I have, suppose I will take 6 over here, right? And I have also pens over here, suppose 5, right? So this is me, that is Mohsin. I will take as example over here, Mohsin, right? I have 6 notebooks and 5 pens. और मेरे पास मेरे 2 दोस्त और हैं, उनके पास भी नोटबुक्स हैं और पेन्स है। तो नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि आप बुरा मान जाएंगे, आप बोलेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया आपने, इसीलिए मैं लेता हूँ एक्स और वाई। सपोज दीज आर माई फ्रेंड्स। सो एक्स फ्रेंड जो मेरा है उसके पास सपोज 4 नोटबुक्स है, और जो पेन्स है उसके पास तो वो चलो मानो 3 पेन्स है उसके पास। और वाई जो मेरा दोस्त है उसके पास 5 नोटबुक्स है और 6 पेन्स है। अब अगर मुझे इस अरेंजमेंट को, सपोज़ मैं लिखता हूँ इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सपोज़ दिस इज़ 6 5 4 3 5 and 6. I can make it in this particular arrangement, right? So this denotes the notebooks here, this denotes the
pens, and these are the just names. Suppose this is me and this is my friend, this is another friend, right? So what is matrix? It is simply the representation of the numbers, especially if we take the mathematics as in the consideration. So it is simply the representation of numbers in a rectangular format. Suppose it should make the rectangular over here. Suppose I will take the another example. This is 2 3 4 5 is another example of the rectangular arrangement. So as you already know, इसमें rectangular में क्या होता है, लेंथ और ब्रेडथ होता है. सो इसमें भी ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर आप ले सकते हैं, उसमें भी एक अलग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेट्स होता है. कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं. जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिसेस एक्चुअली ये क्या हमको मतलब हमको आसानी मिलती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना. इट इज़ स्पेशली फॉर दोज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू सॉल्व, एंड इट इज़ द ईजीएस्ट मेथड टू कैरी आउट द सॉल्यूशंस. ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, राइट. सो मैंने इसमें क्या लिखा, मैंने नोटबुक्स को अरेंज किया कि मोहसिन के पास 6 नोटबुक्स है, 5 पेन्स है, और इसका जो फ्रेंड है उसके पास 4 है. तो हमने उसको एक रिप्रेजेंट किया एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में, दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स. नाउ दीज नंबर्स I have written in the definition part, what we call the numbers or functions are called the elements. जो इसमें अब numbers आ रहे हैं rectangular format में, इनको बोल सकते हैं हम ये elements है. ठीक है, या कह सकते हैं हम कि ये entries of matrix है. These are the terms which are just related to these formats over here. So these are the elements, or you can say that these are the entries of matrix. And another thing which I want to convey with you, my dear friends, these horizontal rows are called the, these horizontal lines are called the rows. Particular term is there in the matrix, that is these horizontal lines are called rows, and these vertical lines are called columns. You should remember, you have to deal with these rows and columns further in the next topics. तो ये आप समझ गए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको हम रोज़ बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस है आप उनको कॉलम कह सकते हैं. ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें अब इस जो मैंने मैट्रिक्स लिया इसमें कितने रोज़ और कॉलम्स है. सपोज दिस वन इज़ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. सो आई कैन से दैट रोज़ इज इक्वल टू 3 in this matrix. What is the number of columns in this particular matrix? That is 1 and 2. This is the columns, right? So I hope you are getting my points. It is clear to you people, that is 2 columns are there. Now we can just proceed. I hope this definition is clear to you people, that what does matrix mean. So it just forms the rectangular format of the numbers over here, right? Now the another topic, which is the order of matrix. Let's understand the order of matrix definition. So I have written it over here. Order of a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n. Simply जब अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो पिछला एग्जांपल हमने लिया, सपोज हम और एक एग्जांपल लेंगे 2 3 5 6 7 8 1 2 3. just randomly I am taking the example. So I can say that in this particular matrix there are rows, 3 rows, 1 row, 2 rows and 3 rows. So horizontal lines are also called as rows. So 3 rows are in the this particular matrix, and 3 columns are in this matrix. So I can write this matrix consists of 3 rows and 3 columns, right? So in the definition it says a matrix having m rows and n columns. M rows and m columns in this particular matrix. M is 3 and n is also 3. So that is called a matrix of order m cross n, or simply you can say that it is 3 cross 3 matrix or m cross n matrix. Generally we say that m cross n matrix. So instead of m here is 3, so I can write it as m and m cross n. Sorry, this 3 is also the number of columns, so this is n. So this is the representation of the order of a matrix. This is the most important part in the exercise. You will see, you have to find out the matrix, you will easily understood later on. So this is called the order of matrix, right? In same wise in the what we call rectangular, if you take the example of a rectangle over there, so it consists of length and breadth over there. So we just write area is equal to length into breadth, but in matrices we called order as just rows and columns. How many number of rows are there, how many number of columns are there. So these are this is just the order of the matrix. Suppose I will give an example now. So this is 2 5 6 8, right? So what is, can you tell me what is the order of this particular matrix? Yes, definitely these are 2 rows and
two columns, two rows and two columns, so it is order will become 2 cross 2. Same like you can variety of examples you can easily make by your own. So now the general representation, if we want to understood over here, so let me take the general representation, right? General representation. So general representation, I will take a11, a12, a13, so on, a1j, so on, a1n, so a21, a22, a23, so on, a2j, so on, a2n. So same like here I will proceed it, a2, ai, ai1, ai2, ai3, so on, aij, so on, ain, right? So next is am1, am2, am3, am3, so on, amj, amn. So finally I can write m cross n. So my dear friends, no need to worry about the general representation, very simple. Suppose this is a11, that is this particular element is in the first row and first column, right? Second element, this is in first row and second column, this is the representation, that is 1 2 1 3, that is in first row second column, first row third column, right? First row third column, so one will remain the same, that is that represents the rows in this particular case, ठीक है? तो जब दूसरा रो हम लेंगे तो उसमें क्या है, a21, a22, a23, a2j, so on, a2n. So in this particular row, so 2 remains the same. क्यों? क्योंकि ये दूसरा रो है तो हर किसी में 2 ही रहेगा, लेकिन कॉलम चेंज करेगा. a21 तो फर्स्ट सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट? इसी तरीके से आप इसको जनरली में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज मैंने इधर जे लिखा, जे मीन्स कॉलम इधर वेरी करेगा, बाकी सेम रहेगा. इसमें भी देखो 2 सेम रह रहा है सभी जगह, सिर्फ कॉलम चेंज हो रहा है, 3 2 1 लाइक दैट, राइट? सेम वाइज हियर व्हाट चेंजेस, हियर रोज चेंजेस 1 2. फिर मैं इसको जनरली लिख सकता हूँ कि आई इधर है, इसका वैल्यू मीन्स कि रो चेंज हो रहा है, बाकी कॉलम सेम रह रहा है, 1 1 1. I hope you are getting my point, right? Then 1 2 3, that is rows are changing, that is I am taking it I, same like in this particular format. So last में मैं क्या कह सकता हूँ कि इसमें जो particular क्या है रोज वो चेंज हो रहा है, उसको मैं represent कर सकता हूँ m के साथ, और बाकी सेम रह रहा है, मीन्स कि कॉलम सेम रह रहा है, am1. इसी तरीके से इसमें भी m ले सकता हूँ, और ये जो कॉलम्स हैं वो सेम रह रहा है, बाकी चेंज हो रहा है, m चेंज हो रहा है. तो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया m के साथ, ठीक है? एंड में जो हम ले सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, j चेंज हो रहा है, सॉरी यस. तो इसमें क्या है, j सेम रह रहा है, तो मैं j ले रहा हूँ, तो a टाइम्स mj. एंड फाइनली मैं लिख सकता हूँ a टाइम्स mn. these are called the rows and columns. So this is the general representation of this particular order of matrix. So I can write its order is m cross n, means it consists of m rows and n columns. You don't know the number of rows in this particular case, and also you don't know the number of columns. So generally you can write down it as m cross n if you don't know the number of rows and number of columns, ठीक है? तो एक हम ले सकते हैं जनरल फॉर्मूला अब मैट्रिक्स के लिए. मैट्रिक्स इज ऑल्सो डिनोट ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, make it as a note that matrix is denoted by the capital letters, right? So this is aij m cross n. So आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, देखो a वैल्यू सभी आप ले सकते हैं, a11, a12, a13, a14, a15, like that. Whatever the number of rows you want, whatever the number of columns you want, you can take it. So this is the general representation of a matrix. That is general representation of a matrix is a is equal to aij m cross n. But condition you have to remember that 1 is less or equal to I, less or equal to m, means this I should be greater than 1 and less or equal to m, that is number of rows. So let's take example. Suppose if I will take I is equal to 0, 0 should not be there, just because the condition is less or equal to I. So there should be some value so that we can make a matrix. So I can call this also as a matrix. Suppose 3 number is here, it is also called as matrix. Why? Just because it consists of one row and one column, that is 1 cross 1. So we can start the number of rows from 1 itself, that is
you can see here the another condition, 1 is less or equal to j less or equal to n. So I and j belongs to n over here, that is natural number. So natural number already you know, which starts from the 1 over there, right? So this becomes your general representation of a matrix. So I hope this is clear to you people. आप अच्छे से समझे होंगे ये कंसेप्ट. सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए एज आई अर्लियरली मेंशन्ड, तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस उठाएंगे. तो वो सभी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और जो आपका एग्ज़ामिनेशन भी है अब नज़दीक है, आप तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अब, क्योंकि बाद में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मैथमेटिक्स. इफ़ आई विल take into the consideration integration is or the differentiation, it becomes very hectic for the students at the last moment of the examination. So start your preparation now itself, so that you can easily score in this subject. I hope this is understood to you people. So make sure you will like this video and share with your all batchmates who are finding difficulties in mathematics subject. Let's togetherly excel this mathematics subject. So thanks for watching my video.